पांडव सर की ज्यांनी सगळी हयात एम्समध्ये घालवली, पूर्ण त्यांनी आयुष्य विज्ञानाला संशोधनाला वाहून घेतलं आहे. खूप मोठा दुर्धर आजार होऊ नये ते उभे आहेत आपल्याला आनंद देण्यासाठी. तर आपण ते सेशन सुरू करतो आहे. हे सेशनमध्ये डॉक्टर वर्षा आपटे आणि डॉक्टर झैदी सर त्यांच्यासोबत असतील. मी त्यांना विनंती करतो कृपया स्टेजवर यावं. ज्ञानयज्ञ प्रतिष्ठानच्या पद्म फेस्टिवल दुसऱ्या पर्वामध्ये सगळ्यांचं मी डॉक्टर वर्षा आपटे स्वागत करते. आज आपल्याला आपले प्रमुख पाहुणे आणि माननीय डॉक्टर चंद्रकांत पांडव सर इथे उपस्थित आहेत. 2021चा पद्मश्री सर्वोच्च अवॉर्ड सरांना मिळालेला आहे. डॉक्टर चंद्रकांत पांडव सरांना आयोडीन मॅन ऑफ इंडिया म्हणून मानलं जातं. सरांनी त्यांचं MBBS आणि MD हे दोन्ही AIMS दिल्ली इथे केलेलं आहे आणि त्यानंतर ते प्रोफेसर अँड हेड म्हणून कम्युनिटी मेडिसिन ला होते. त्यानंतर सरांनी पूर्ण युनिसेफ, WHO ह्याबरोबर इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनबरोबर काम केलेलं आहे आणि आयोडीनचा इश्यू त्यांनी पूर्ण जगभरात प्रसिद्ध केलेला आहे आणि त्यामुळे युनिव्हर्सल सॉल्ट आयोडिनायझेशन हा प्रकार म्हणा किंवा आपल्या हेल्थच्या दृष्टीने सुरू झालेला आहे. तर आज आपण सरांशी चर्चा आणि वार्तालाप करणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं आपण सगळ्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं डॉक्टर दिलशाद ज़ैदी, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन औरंगाबाद. यहाँ मैं पैनलिस्ट हूँ. डॉक्टर वर्षा आपटे मैडम जो एक रेनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर है औरंगाबाद के, इनके साथ ये आखिरी सेशन है पद्मा 2023 का. तो सर स्टार्ट करने पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आपकी जो जर्नी है एक शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज करमाट से लेके आज तक, जब आप एक ग्लोबली रिनाउंड डॉक्टर है, द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आज गॉइटर कम्प्लीटली एराडिकेट हो गया इंडिया से. सिर्फ ये नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप रिनाउंड है. आपकी कोशिशों की वजह से ग्लोबली IQ लेवल 1.5% बढ़ा है. तो एक छोटे विलेज से लेके ये लेवल तक आपकी इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियन्स को. आत्तापर्यंत मी बरेचसे पब्लिक प्लॅटफॉर्मवरती वार्तालाप केलेला आहे, गोष्टी केलेल्या आहेत. तर सर्वांच्या प्रथम मी आपले डिफेन्स फोर्सेस आहेत, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, सिव्हिल डिफेन्स, ह्या लोकांना मनापासून धन्यवाद देतो. ते 24 तास आपल्या देशाचा पहारा करतात, 365 दिवस. रात्री तुम्ही आरामात झोपू शकता कारण ते जागे असतात आणि मी त्यांना धन्यवाद देतो. दुसरं धन्यवाद कोविड-19 वॉरियर्स. पहिल्या वेव्हमध्ये 700+ डॉक्टर्स गेले, सेकंडला 750 गेले. इंग्लिशमध्ये एक कविता आहे, इनटू द व्हॅली ऑफ डेथ. त्या कवितेमध्ये असं सांगितलं होतं की युद्ध चालू होतं ब्रिटनमध्ये आणि जे घोडेस्वार होते त्यांना माहीत होतं की त्या दरीमध्ये गेले तर ते परत येणार नाही. चार्ज ऑफ द लाईट ब्रिगेड. कुणाला माहीत आहे का कविता कोण आहे कवी याचा? चार्ज ऑफ द लाईट ब्रिगेड रोड इन टू द व्हॅली ऑफ डेथ. तसंच डॉक्टर लोक जे सेवा करत होते त्यांना कल्पना होती की दे वर ॲट अ व्हेरी हाय रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19. तरीसुद्धा त्यांनी रोगांची सेवा करायला कमी केलं नाही.
तर मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि त्यांच्या परिवारांना, their families, young families. Some of them were unborn children, their mothers were pregnant, their wives were pregnant. तो त्यांना पण मी मनापासून धन्यवाद देतो. तिसरं धन्यवाद, आज आहे सोमवार, आज गुरुपौर्णिमा आहे, दुपारची वेळ आहे. तुमच्यापैकी बरेचसे लोक सकाळपासून इथे थांबले असतील. इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ द पीपल बट द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस दैट मेक्स अ डिफरेंस. तो मैं आप सब लोगों को मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो, मनापासून. चौथी आहे, मी स्टेजवरती ह्या वेळेला बसलो आहे आणि त्याच्या पाठीमागं मोठी टीम आहे. नानी पालखावाला म्हटले होते, नोटेड इंडियन ज्युरिस्ट, दॅट वी इंडियन्स आर एक्सलंट सोलो प्लेयर. आपण एकदा तबला वाजवला, हार्मोनियम, वायलिन खूप चांगले आहेत, बट वी मेक अ व्हेरी पुअर ऑर्केस्ट्रा. आपल्याकडं मॅनेजमेंट स्किल्स, त्यावेळेला ते म्हटले होते, नथिंग्स आर बेटर. तर अजय, कांचन आणि मोठी टीम आहे. मी कालपासून पाहतो, तुम्हाला फक्त पडद्यासमोरचे कलाकार दिसतात, पण पाठीमागं तेवढ्याच मेहनतीने, तेवढ्याच शांततेने, तेवढ्याच प्रोफेशनली लोक काम करतात. तर मी त्यांना धन्यवाद देतो. आज गुरु नानकचा वाढदिवस आहे. 2 मिनटं फक्त त्यांच्याकरता आपण एक छोटीशी प्रार्थना म्हणूया, छोटीशी. नानक आया कल तारण गुरु नानक आया. नानक आया कल तारण गुरु नानक आया. चलो चल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए. चलो चल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए रे. चलो चल भव सागर मिल तरिए कलयुग तारन आए रे. चलो चल भव सागर मिल करिए कलयुग तारन आए रे. सतगुरु नानक आए. चलो चल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए रे. चीर हनेरा उपजया एक नूर तरत अवतारया. दसानो हादी किरत कर उस पापे जगनू तारया. गुरु आदा लड़बड़िए जो कण कण विच समाए ने. सतगुरु नानक आए ने. चलो चल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने. खूप सुंदर गीत आहे. याच्यामधले बरेचसे आर्टिस्ट आहेत. शंकर महादेवन आहे, कपिल शर्मा आहे, आणखी बरेचसे लोक आहेत. तर आता प्रश्न येतो तुमच्या प्रश्नाचा. माझा जन्म करमाळा हे तालुक्याचं ठिकाण, 3/11/1951. जन्माचं रेकॉर्ड असतं गावात. तर मला पाहिजे होतं की रेकॉर्डाची मला फोटो पाहिजे होता. तर माझे भाऊजी करमाळ्याला गेले आणि तिथं पाहत होते
नोव्हेंबर 51 साली कोण कोण जन्माला आले. तर एक आश्चर्याची गोष्ट आहे, 1951 सालचं रेकॉर्ड जळलं होतं. तर ऑफिशियली मी नाही आहे, कारण रेकॉर्डच नाही आहे जन्माचं, तर मी कसं काय असणार. तर असा आयुष्यात असे बरेचसे प्रसंग आले. तर करमळ्याचा जन्म, त्यावेळेला मॅडमसारख्या क्वालिफाईड डॉक्टर्स नव्हत्या. माझा जन्म कुणी केला? दाईनी. ती अनट्रेंड होती, ट्रॅडिशनल बर्थ अटेंडन्स. नंतर माझ्या रिसर्चमध्ये तिने खूप महत्त्वाचा वाटा केला, मी सांगेल तुम्हाला. तर तुम्हाला खरं वाटत आहे आता मी खूप शांत आहे, शांत झालो. अधूनमधून फ्लक्च्युएशन झालं तर मी शिवाय द्यायला पण कमी करत नाही, आणि मग लोक आठवतात. तर लहानपणी मी खूप खेळकर होतो. माझे वडील सरकारचे सर्वात श्रेष्ठ अधिकारी त्या गावात होते, करमाळ्यात, सर्कल इन्स्पेक्टर. तर माझे आईवडील कंटाळले. तर एक आठवण आहे, तर शेजारच्या मुलाला, ज्याला मी रोज मारायचो, तो एक दिवस त्यांनी ब्लेड आणलं, ब्लेड, आणि माझ्या हातावरती असं ब्लेड मारलेलं आहे. त्याची मॅडम जखम अजून आहे. हे आहे. आहे ना. तर पासपोर्टमध्ये तुम्हाला एक कॉलम असतो, आयडेंटिटी मार्क. तर माझा आयडेंटिटी मार्क तो, आणि आय एम ग्रेटफुल टू दॅट बॉय. त्याच्यामुळे माझा आयडेंटिटी मार्क झाला. तर करमाळ्यावर माझ्या वडिलांची बदली माळशिरसला झाली. तर पहिली, दुसरी, तिसरी मी माळशिरसला केली. काय असायचं, आईवडिलांच्या आशीर्वादाने, देवाच्या कृपाने माझी मेमरी खूप चांगली आहे आणि होती. मला वयाच्या 3 वर्षापासून आठवतं माझ्या आयुष्यात काय घडलं ते. तर त्या शाळेत गेल्यानंतर परत तोच धंदा, मारामारी. वर्षाचा सिलेबस मी पहिल्या महिन्यात संपायचो. उरलेले 11 महिने फक्त वर्गात दंगा. सगळे कंटाळले होते. मुख्याध्यापकाने बोलवलं एक दिवस, चंद्रकांत ये, तू फक्त सकाळच्या 1 तास ये, तुझी हजेरी लाव, आणि शेवटच्या तासाला ये. आम्ही तू शाळेत आला असं समजू, पण तू शाळेत येऊ नको. आता वेळ आहे, 8 तासाची शाळा, तर 6 तास. तर आपल्या गोट्या, कंच्या, पिठू तांदूळ, पारंब्या, पोहणे. नंतर मला आयुष्यात 2 प्राणी खूप आवडतात. एक म्हणजे गाढव आणि दुसरं म्हणजे डुक्कर. माझे परममित्र. तर मी काय करायचो, गावातले गाढव पकडायचो, त्याच्यावरती बसायचो आणि डुकराचा पाठिंबा करायचो. तर अशी माझी लहानपणाची दिवस. आता तुम्हाला सांगतो मी गाढवाला का आवडतो, मला का आवडतं गाढव. 2 गोष्टी आहेत. ज्या लोकांनी इतिहास वाचला असेल, गाढवाचे एक वैशिष्ट्य, ते तर बिचारं काम करतं दोब्याच्या घरी, शांतपणे निमूटपणे करतं. तर गाढव फक्त स्वच्छ पाणी पितं. जर पाणी गढूळ असलं किंवा त्याच्यात काय मिसळलं तर ते पाणी पित नाहीत. पूर्वीच्या वेळी युद्ध असताना विरोधी सैनिक किंवा सेनापती गाढवामध्ये विष मिळवायचे पाण्यामध्ये,
त्यामुळं ऑपोजिट पार्टी गाढवाला पुढं पाठवायची की त्यांनी जर पिलं तर सेफ आहे, नाही पिलं तर सेफ नाही आहे. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन, महत्त्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे हो गाढवाचं. एक अहमदनगरला एक गोरखनाथचं मंदिर आहे, तिथं गाढवाचा बाजार बसतो. तर तो मी जाऊन भेटून आलो माझ्या मित्रांना, फक्त त्यांना भेटायला गेलो होतो. त्याच्यानंतर मॅडम मेडिकलचे दिवस, इंटर्नशिप. आमचे प्रोफेसर ऑफ कार्डिओलॉजी डॉक्टर B.C. रॉय, टॉल फिगर, 6 फूट 4 इंच, बोट आहे, आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूचे पर्सनल कार्डिओलॉजिस्ट. तर ते सकाळी राऊंड घ्यायचे, आमचे राऊंड असायचे, तुम्हाला माहीत आहे, सुबह राऊंड रहते हैं, सकाळी 8 ते 9. आमच्या शेजारी एक थिएटर होतं सुदर्शन, तिथं सिनेमा बघायचो आम्ही. तर त्यावेळेला नागिन लागला होता, नागिन सिनेमा. तर नागिनमध्ये 16 गाणी आहेत, 16. तर माझी त्याची मैत्रीण होती, जो चालवतो ना, तर त्याला गाण्याला म्हणायचं वन्स मोर वन्स मोर. नागिन सिनेमा लांब आहे तसा, 3 तास 10 मिनटाचा. तर त्या दिवशी तो सिनेमा पहाटे 4 वाजता संपला. माझी केस मला 8 वाजता प्रेझेंट करायची. डुलकी लागली होती, थोडी झोप घेतली. 7:45ला उठून आम्ही, तुम्हाला माहीत आहे काय अनुभव असतो, पळत पळत 8 वाजेपर्यंत दमछाकत पडलो, हॉस्पिटलला पोचलो. हां, डॉक्टर नव्हतो त्यावेळेला, चंद्रकांत. एक मात्र गोष्ट होती, आमच्या शाळेत नेहमी पहिल्या नावाने बोलवायचे, चंद्रकांत आज आपका दिन है, केस प्रेझेंट करू. केस प्रेझेंट केली. त्याच्यानंतर त्यांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. पहिला प्रश्न, कार्डिओलॉजी. सर मला उत्तर माहीत नाही. एक चांगलं शिकलो शाळेत, तुम्हाला येत नसलं तर सांगा की मला माहीत नाही. दुसरा प्रश्न, शांतपणे बसलो. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए. सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ तक मैं सिलेबस पढ़ नहीं सका. अच्छा, आसान सवाल पूछता हूँ. त्याचंही उत्तर नव्हतं. गधे के बच्चे, तुम्हारे माँ बाप मेहनत करते हैं, तुम दिल्ली में आए हैं महाराष्ट्र छोड़ के, गधे के बच्चे, कुछ अकल है क्या नहीं? तुमसे ज़्यादा मैं मेरे घर के बाहर 5 साल तक गधा रखूँगा, उसको डॉक्टर बनूँगा, लेकिन तुम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते. तर गधा मी कंटाळलो. सकाळपासून चांगला आशीर्वाद होता, गधे के बच्चे. तर बेड होतं, आय जस्ट वेंट अराउंड द बेड. सरांच्या पाया पडलो आणि म्हटलं, सर आखिर हम भी आपके ही बच्चे. बदमाश, आप ही शाम को घर पे आ जाओ, मेरे साथ खाना खाओगे, बहुत बोलने लगे हो. So that was the atmosphere in AIIMS, Gurukul. So I had a drink, he gave me wine and he gave me dinner. मैंने बोला अच्छा है यार, गधे का बच्चे बनने का क्या फ़ायदा है. तो ये रही गधे की बच्चे. अब जहाँ तक सुअर की बात आती है, there is a difference between involvement and commitment. Can anybody tell me difference between involvement and commitment? अच्छा चलो बताता हूँ. जो लोग अंडा खाते ब्रेकफास्ट के लिए, मुझे पता चला कि बम्बई में बैदा बुलाते ना अंडे को, बैदा. तो जो अंडा खाते, दैट इज इन्वॉल्वमेंट. द hen was involved in laying the egg. मुर्गी ने अंडा दिया लेकिन मुर्गी जीवंत होती. In commitment, when you look at
traditional English breakfast. They have brown bread, marmalade, jam, butter, and they have sausages. So, in laying of the egg, the hen was involved. But in making of the sausages are made from pig. He sacrificed his life. So that is the difference between involvement and commitment. जब आप committed है तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है. तो ये रहा सफ़र. उसके बाद हाँ मैडम. नाही सर व्हिडिओ दाखवायचं. सॉरी. नाही पुढच्या ह्याच्या आधी व्हिडिओ एक आपल्याबद्दल. अच्छा जरूर देखिए प्लीज. आपण आधी व्हिडिओ रन करू आणि हाँ दिखा दीजिए. वन पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स. चाइनीज सही है. एक तस्वीर देखो, मुझे इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं. तो आपके सामने हम पेश करते हैं प्रीमियर वीडियो. सागर संपदा का अनमोल खजाना नमक सिर्फ हमारे जीवन का ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का भी बेशकीमती हिस्सा है. स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी ने दांडी मार्च में नमक को आजादी का प्रतीक माना था. डॉक्टर चंद्रकांत पांडव के नेतृत्व में गठित वैज्ञानिकों की टीम ने 40 सालों के अथक शोध के बाद ये प्रमाणित किया कि गर्भधारण से लेकर 7 साल तक की उम्र में होने वाले बच्चे के मानसिक विकास में आयोडीन युक्त नमक सिर्फ अहम भूमिका ही नहीं निभाता बल्कि घेगा यानी गॉइटर जैसे घातक बीमारी से भी बचाव करता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर पांडव के शोध कार्यों को स्वीकार करते हुए सन 1984 में यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन कार्यक्रम को भारत में लागू किया. डॉक्टर पांडव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने जन्म स्थान सूखा प्रभावित गांव करमाड़ा जिला सोलापुर में प्राप्त की. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप से सम्मानित होने के बाद नेशनल मॉडल स्कूल आगा खां पैलेस पुणे में उच्च स्कूली शिक्षा का सफर पूरा किया. अति प्रतिष्ठित संस्थान एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. ग्रामीण इलाकों में अपनी निस्वार्थ भावना से सेवा प्रदान करने हेतु डॉक्टर पांडव प्रोफेसर वी रामलिंग स्वामी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने. ये जानते हुए कि आपका रुझान न्यूरो सर्जरी की तरफ है, फिर भी आपकी निष्ठा और काबिलियत को देखते हुए प्रोफेसर वी रामलिंग स्वामी ने आपको प्रोत्साहित किया कम्युनिटी मेडिसिन के क्षेत्र में योगदान के लिए. आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल के कारण आज गॉइटर लगभग पूरे देश से समाप्त हो चुका है. डॉक्टर पांडव की शिद्दत और शोधों के कारण आज पूरे विश्व में 1.5 बिलियन आईक्यू पॉइंट्स की वार्षिक बचत संभव हो पाई है. 40 साल के बेमिसाल कार्यकाल में तकरीबन 60 देशों में यूनिसेफ और WHO जैसी संस्थाओं के सलाहकार की हैसियत से भी आप अपना बहुमूल्य अनुभव और ज्ञान बांटते रहे. डॉक्टर पांडव को स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित 14 किताबों के सह संपादक होने और 400 पेपर्स को कलमबद्ध करने का गौरव प्राप्त है. आपको सन 2001 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में फेलो और फेलो ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन एंड सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ लंदन जैसे पदों से नवाजा गया. डॉक्टर पांडव को सन 2000 में कम्युनिटी मेडिसिन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा डॉक्टर M.K. शेषाद्री पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया. सन 2017 में WHO द्वारा डॉक्टर पांडव को पब्लिक हेल्थ चैंपियन घोषित किया गया. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण काउंसिल के माननीय सदस्य डॉक्टर पांडव का योगदान जन स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरणीय स्वास्थ्य, संस्कृति, खेलकूद आदि में भी काबिल तारीफ है. आज सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर के अति सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके अद्वितीय जीवन रक्षक योगदान के लिए तहे दिल से डॉक्टर पांडव का आभार व्यक्त करते हैं. विज्ञान, समाज, सद्भावना और राष्ट्रवाद का खूबसूरत ताराबाना बुनने वाले इस आयोडीन मैन को सम्मानित करते हुए पूरी मानवता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है. जी हां, डॉक्टर चंद्रकांत पांडव.
डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव, चिकित्सा। थँक्यू सो मच. सर, आम्हाला प्रत्यक्ष हा सोहळा पाहण्याचा अनुभव आलेला आहे. तर आम्ही म्हणजे नॉर्मली आम्ही ही शेवटी विचारतो, पण आज आता आधी विचारते मी तुम्हाला जेव्हा पुरस्कार बद्दल सांगण्यात आलं तर तुमची काय प्रतिक्रिया होती आणि सोहळ्याबद्दलही आम्हाला सांगाल. तुम्ही 2 प्रश्न विचारले आहेत. तर पहिली गोष्ट अशी आहे, 25 जानेवारी 2021 मी पुण्यामध्ये ताज ब्ल्यू डायमंडमध्ये एक मीटिंग घेत होतो. तर मला 1 वाजता फोन आला. एम आय स्पीकिंग टू डॉक्टर पांडव? येस सर, दिस इज डॉक्टर पांडव हियर. I am the Secretary Home to the Government of India. I have a good news for you. Yes, sir. What is the good news? The Government of India has decided to confirm Padma Shri on you. इसके पहले याच्या अगोदर 1988 साली सर सूर्यकांता पाटील माहीत आहेत कोणाला? मेंबर ऑफ पार्लमेंट. तर ताई त्या माझ्या व्हेरी क्लोज फॅमिली फ्रेंड. आमचे घरी संबंध खूप चांगले होते. 1988 साली ते मला डॉक्टर शंकर दयाळ शर्माकडे घेऊन गेल्या. 1988 त्यावेळेला ते राष्ट्रपती होते. ताईंनी ओळख करून देताना सांगितलं की हा चंद्रकांत आहे, खेड्यातून आलेला आहे, एवढं शिकत आलेलं आहे, अमकं चांगलं काम चाललेलं आहे. तर डॉक्टर शंकर दयाळ शर्मा की डॉक्टर पांडव, please apply for Padma Award. I will make sure that you get Padma Shri. Imagine, the President of India is telling me to apply for the award, and he said, I'll make sure that you get it. तो मैंने बोला, सर माफ़ी चाहता हूँ, जब मेरा सही वक्त हो तो मैं अप्लाई करूँगा. 88 ला मैडम आई वॉज लेक्चरर इन अ मेडिकल कॉलेज. अगर लेक्चर हो के मुझे पद्मश्री अवार्ड मिलता तो मेरे प्रोफेसर को क्या लगता है? मैंने बोला, सर आपके साथ तो आप तो हमारे साथ 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद यू रिटायर एज ए प्रेसिडेंट. मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाकी फैकल्टी मेरे को ज़िंदगी निकालनी है तो मैं अपना इंतज़ार करूँगा. इसके बाद और एक किसी ने नॉमिनेट किया, नहीं हुआ. फिर मुझे 32 साल के बाद 1988-32 32 साल के बाद मिला पद्मश्री, वो भी पद्मश्री. तो मैंने अपना स्वतःचं कन्सोलेशन कसं करायचं आयुष्यामध्ये की मेरे मुंह में 32 दांत है, 32 साल के बाद मिला. यू मस्ट लर्न टू कंसोल योरसेल्फ. दुसरा प्रश्नाचं उत्तर. ज्यावेळेला हॉलमध्ये समारंभ होता, बलवंत भैया तेरा सामने आई. ये बलवंत भैया मेरे साथ 25 साल से है. ये फ्रॉम उत्तराखंड बागेश्वर का. 25 साल की मेरी सेवा कर रहे हैं. सेवा मैं उसको बोलता हूँ कि पिछले जन्म में मैंने आपकी बहुत सेवा की, इसलिए
आप मेरी सेवा भी कर रहे। तो ही वॉज विथ मी। आई हैड डेवलप्ड पार्किंसोनिज्म एट दैट टाइम। पार्किंसोनिज्म में डिसीज ऑफ द नर्वस डिसऑर्डर। इसमें कुछ मुन्ना भाई किसी ने देखी सारी, मुन्ना भाई तो देखा होगा ना फिल्म मुन्ना भाई, उसमें केमिकल लोचा है ना, वो केमिकल लोचा मुझे हुआ था अभी भी है। सो बी केयरफुल। तो उसमें क्या है, 4 हार्मोन्स रहते हैं आपको याद के लिए, DOSE, D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। 4 हार्मोन से सारा खेल इसी का होता है। तो इसमें जब डोपामीन की कमी होती है, इट्स अ केमिकल डिसीज, तो आपको पार्किंसोनिज्म होता है, आपको ट्रेमर्स होते हैं, नीचे झुक के करते हैं, बात करने में यूस्लर, क्लैरिटी नहीं रहती बात में। तो आई वॉज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर। उस दिन सुबह उठना पड़ता था। दे आर ओनली 2 people to come with me. My wife had undergone bilateral knee surgery, so she couldn't come. So Balwant आया because he was taking care of my wheelchair. And my daughter came, Rujuta. उस फिल्म में दिखती है वो। Rujuta is now a Harvard graduate. And my other son is a Pennsylvania. Rujuta is doing neuroscience. She is also Odissi dancer. हिंदुस्तानी वोकल, सितार, मल्टी टैलेंटेड है। तो मेरे आँखों में मिक्स्ड फीलिंग्स, आँखों में मेरे आंसू है तो मुझे माफ़ कर लीजिएगा। जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्षणच तसा आहे. फ्रॉम अ विलेज। और आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना, ते सावत्र होते, त्यांची आई लहानपणी वारली होती। तर तिघा भावांना माझे वडील, त्यांचे मोठे बंधू आणि त्यांची धाकटी बहीण यांना घरातून हाकलून लावलं। सावित्री आहे ते, सावत्र आहे ते। पण कुठे गेले ते मामाकडे शिकले। मामाकडे पण गरिबी, 2 वेळेचं जेवण नाही मिळायचं। पण माझे वडील स्मशानभूमीमध्ये जाऊन तिथले दैवत त्याच्यावरती जगले हो। तो शुरुआत वहाँ से, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों की। आई कांट कीप क्वाइट। सो दिस इज वेयर वी हैव कम फ्रॉम। काफ़ी लंबी सफ़र रही, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। प्लीज़ आप लोगों से विनती है, अपने माता पिता को मत भूलिए, उनका आशीर्वाद लेके रोज़ सुबह शाम उनके पैर छोड़ो। तो हॉल में और विचार आहे की मेरी ज़िंदगी में किन लोगों का सहयोग रहा, काय लोकांनी माझ्या आयुष्यात मदत केली, त्यांची आठवण आली। तर सगळ्यात आठवण प्रथम कोणाची? आमच्या गुरुची आली। आयुष्यामध्ये मी आज जो कोणी आहे तर माझ्या गुरुमुळे आहे। गुरु, मला आयुष्यात खूप चांगले गुरु भेटले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे गुरु मिले। तो याद आई मेरे स्कूल की, नेशनल मॉडल स्कूल, आगा खान पैलेस, नगर रोड। नाम सुना है आप लोगों ने? आगा खान। 1942 में महात्मा गांधी जी को चलो क्विट इंडिया बोला था, तो उनको वहाँ जेल में रखा था, आगा खान पैलेस में। दैट इज आगा खान पैलेस। पुणे जाओगे तो ज़रूर जाइए, वहाँ कस्तूरबा गांधी, उनके सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई की समाधि है। अब जिंदगी का खेल देखो, महादेव भाई देसाईचा पुतण्या MBBSला माझ्या वर्गात होता। काय खेळ बघा ना। आणि गांधीजींनी मिठाच्या सहाय्याने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं, दांडी यात्रा 1930। आणि माझं आयुष्य मिठाच्यावरती काम केलं। व्हॉट अ स्ट्रेंज कोइन्सिडन्स, इट इज नॉट स्ट्रेंज।
इट्स ऑल डिज़ाइन। तो मैंने एक किताब लाई है, आपके पास छोड़ दूंगा बलवंत भैया, सॉल्व फॉर फ्रीडम, आयोडाइज सॉल्व फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रेन डैमेज। तो ये कहानी रही। तो सारे लोगों की याद आई ज़िंदगी में जिन्होंने साथ दिया बुरे समय पे, उनको भूलना नहीं। आयुष्यामध्ये एक महत्त्वाचा शब्द आहे धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। इसको मत भूलिए प्लीज़, डोंट फॉरगेट दिस, लर्न टू से ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, शुक्राना, क्योंकि आपके बुरे टाइम पे इन्होंने साथ दिया है। नाहीतर म्हणतात ना, मराठीत म्हण आहे, जिथं गुळ आहे तिथं बोंगळे येतातच ना, बरोबर आहे ना? बोला ताई, ताई म्हटलं तुम्हाला, बोलो भैया। सर, आयोडीन से आपका जो रिश्ता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप लोग बड़े सोच के सवाल पूछ रहे हैं, शायद इन्होंने लंच नहीं खाया। शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ न्यूरोसर्जन। मैंने मेडिसिन इसके लिए ज्वाइन किया कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना था, न्यूरोसर्जन। माय फादर वांटेड टू बी अ कलेक्टर। उस समय कलेक्टर का बड़ा रुतबा आहे, रुतबा शेजारी पहा ना कलेक्टरचं घर, पाहिलं का? मोठं घर. अर्धा औरंगाबाद तिथं आहे। मैडम सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मोठं घर आहे, अर्धा औरंगाबाद व्याप्त आहे. उनको मैंने इनविटेशन दिया था आज आने के लिए। बलवंत नोज ऑल द, ही इज अ मल्टीपर्पज वर्कर, उसको सब आता है। तो ये किताब है सॉल्व फॉर फ्रीडम, आइडिया सॉल्व फॉर फ्रीडम ऑफ ब्रेन डैमेज। इसके 25,000 कॉपीज़ मैंने बांटे, 25,000 कॉपीज़ मैंने आप लोगों के लिए लाई है। बहुत whenever I used to carry my luggage, 90% of my luggage was this किताब, बाकी मेरे कपड़े थे। तो मैडम आप लोग बोल रहे थे पागल होना पड़ता, तभी ऐसे काम होता है, पागल। मैं छोड़ दूंगा अजय भैया। तो उस समय उड़ीसा में साइक्लोन हुआ, तो आई हैड डॉक्टर रामलिंग स्वामी एज माय डायरेक्टर ऑफ एम्स। ही सेड चंद्रकांत व्हाट यू वांट टू बी? आई सेड आई वांट टू बी न्यूरोसर्जन। मुझे फेलोशिप भी मिली, कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट में 5 साल की डायरेक्ट फेलोशिप मिली। कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट इज अ प्लेस वेयर नोबेल अवार्ड विनिंग फंक्शन इज हेल्ड इन स्वीडन, वेरी प्राइस। तो हम चले गए, गुरुजी ने बोला रिमेंबर देयर आर 2 kinds of teachers you meet in life, those are mentors and those are tormentors। तो इसलिए आई वेंट टू कम्युनिटी मेडिसिन, आई लेफ्ट न्यूरोसर्जरी। तो एक दिन मेरे टीचर्स वी हैड अ वेरी नाइस फंक्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ज़रूर आइए, जब आएंगे तो मुझसे ज़रूर मिलना। मेरी माँ है वो, दूसरी माँ। आई स्पेंड 45 years there। 1 August 71 आई ज्वाइन, रिटायर्ड ऑन 30 November 2016। 45 साल मेरे, वो मेरी माँ है, इट्स माय अल्मा मैटर। तो अब आयोडीन की तरफ कैसे गए? हमारे इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक था, मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर भी था, वाइस प्रेसिडेंट। स्ट्राइक इसके लिए कि थीसिस नहीं लिखना, लेकिन मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर नाथ। बाकी दुनिया जो करे न करे, आपको लिखना ही पड़ेगा। तभी 2 साल का एमडी था मैडम, 2 years सर, 2 years MD, देन सीनियर रेसिडेंसी। ही सेड अगर मेरे डिपार्टमेंट के आपको 4 साल बिताना है तो आप मत लिखिए। सो दिस वॉज माई थीसिस सर। It got published in Indian Journal of Medical Research, endemic goiter in Delhi. Normally, my dear friends, young friends, when I was doing my MD, I published my first paper in Indian Journal of Medical Research. ऐसा होता नहीं है. So I went for my MD final exam.
एक्सटर्नल ने पूछा, अच्छा आप है डॉक्टर पांडव जिसने अपना थीसिस पब्लिश किया एमडी एग्ज़ाम के पहले? उन्होंने बोला हाँ सर मैं वही हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया। इस थीसिस में मेरे को इंस्टीट्यूट की ग्रांट मिली थी 10,000, फर्स्ट रेसिपिएंट, फर्स्ट पर्सन हु डिड लॉट ऑफ ब्रॉट ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर, बायोस्टैट्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, थायराइड, एंडोक्रिनोलॉजी, कोलैबोरेशन की स्पिरिट है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर पांडव एक्सटर्नल का, आपने तो एक पेपर किया, मैंने तो 2 किए, चलो पास हो जाओ, जाओ चले जाओ। तो हमने एमडी हो गया। उसके बाद मुझे पीएचडी करना है। अब ध्यान में रखिए, आई ऑलवेज टुक द पाथ विच आई हैड डिसाइडेड। मेरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट मैंने अपने आप लिखी है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, उसके पीछे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मैंने पीएचडी की एंडोक्रिनोलॉजी में, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम किया आयोडीन के ऊपर। आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर 150 days, स्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूपी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, पटरौनिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारे याद है। बेले जघाट, महेंद्र घाट, सौराठ सभा। रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी तो डाक बंगले के बरामदे में सोते थे, कभी रेलवे के प्लेटफॉर्म में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, आपको अच्छा लगेगा। गोंडा वॉज ए डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ फूलन देवी मिली मेरे को। कौन मिली? फूलन देवी। उसने बोला डॉक्टर पांडव आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपको क्या सेवा कर सकती हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने बोला फूलन देवी जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो शी केप्ट 1 person, एक गनमैन मेरे पास छोड़ा था, बॉडीगार्ड। मैंने बोला मैडम मुझे कौन लाएगा, मेरा जो कुछ भी है इधर है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो बड़े कठिन समय में मैंने 10 साल बिताए और उसमें 4-5 चीज़ नहीं दिखाई। एक तो एक्स्ट्रा हिमालयन फोर्स ऑफ गोइटर, बिसाइड्स दिल्ली there are other parts of India which I was working with P.V. Sathe. He was one of the collaborators. Dr. Sathe, head of the department of community medicine. He's still alive. I met him in Pune. Second was other effects of goiter. Goiter is only the tip of the iceberg. So I did psychometry, audiometry. Film में जाके मैंने the effects of hearing a speech के बारे में लिखा. Then I did psychometric assessment in school children. तो उसमें 2 children who were from iodine deficient areas had 10 to 13 IQ points less than that. When these findings were presented to Mrs. Gandhi, as you saw in the paper, in the film, she took a decision. Dr. Pandav, क्या करना चाहिए? मैडम सारे हिंदुस्तान में एक बीमारी है. Please start universal salt iodization. 84. तो क्या था, तभी कॉमर्स मिनिस्टर थे एनडी तिवारी. तो आई यूज्ड टू गो टू द पार्लियामेंट एंड आस्क क्वेश्चंस कि भारत सरकार आगे कुछ क्यों नहीं कर रही है, करना चाहिए, देरी है, देश का महत्वपूर्ण कार्य है. तो एनडी तिवारी ने टाटा केमिकल्स के जो चेयरमैन थे सेठ, दरबारी सेठ, उनकी बिटिया दिल्ली में है, उससे मिलना है मुझे. बोले सेठ साहब एक लड़का है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरी ज़िंदगी बड़ा ख़राब कर रहा है, बार बार पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहा है. और मैडम मेरे पीछे लगी कि तिवारी साहब कुछ कर लीजिएगा नहीं तो आपको निकाला जाएगा. So that's how Tatas came into the picture, and that's why you equate iodized with Tata's iodized. इसके पीछे ये कहानी है. सर यही कांगरा वाली स्टडी जो आपने कहा है, सेम स्टडी आपने की, म्हणजे तुम्ही जे फिरलात यूपी, बिहार, हरियाणा या सगळ्या एरियामध्ये तुमचा थीसिससाठी झालंय का ह्या स्टडीसाठी स्पेसिफिक? स्टडीसाठी बेसिकली इट वॉज माय पीएचडी वर्क. बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, पब्लिश और पेरिश. मेरी आदत थी कि जो भी मेरे 650 रिसर्च पेपर्स हैं. कितने? 650. और अभी भी लिखता हूँ. इवन नाउ आई एम राइटिंग 10 पेपर्स. इसका सीक्रेट बताता हूँ मैडम. आई यूज्ड टू हैव 10 to 12 स्टूडेंट्स. सबको एक एक टॉपिक देता था.
and then I used to sit with them. Most important, I made them first author. इसलिए इतने papers बने, इसलिए इतने paper. When I went to the international forum, आपने पूछा नहीं, पूछ लीजिएगा. मी त्याच्या आधी एक मेन्शन करते की जसे गुरु तुम्हाला मिळाले तसेच तुम्ही गुरु म्हणून तुमच्या विद्यार्थ्यांना पुढे देत आहेत सर. वेगवेगळ्या स्टडीज, पहिलं नाव विद्यार्थ्यांचं देऊन सरांचे पेपर्स ते पब्लिश करतायत. तर गुरुचा वारसा तुम्ही पण पुढे नेताय सर. ते माझे कर्तव्य आहे. आपको जो गुरु से मिलता है वो आपका नहीं होता, वो शिष्य का होता है. ये ध्यान में रखिए. यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट अ मीडियम. आप सिर्फ माध्यम है. और ज़िंदगी में एक चीज़ है जहाँ ज्ञान का सवाल आता है, जितना देते उतना बढ़ता है, जितना देते उतना बढ़ता है. आई गिव इट अ सिमिलर फर्टिलाइजर. इफ़ यू कीप द फर्टिलाइजर इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इट स्टिंग्स. बास आती है फर्टिलाइजर, उसको अगर बिछड़ा जाए तो अच्छी सुगंध आती है फूल की. सो नॉलेज इज़ लाइक दैट. सर, आपकी सक्सेस में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा, इसके ऊपर कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन. स्टार्टेड विथ माई पेरेंट्स. संस्कार माता पिता से. मेरी माँ ने बोला कि तुम्हारा जन्म समाज की सेवा के लिए है. क्या? तुम्हारा जन्म समाज की सेवा के लिए है. नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा. ऐसा है. उसने बोला बेटा, जो चीटी रहते ना, मुंगी ती स्वतःसाठी जगते आणि बेडूक पण स्वतःसाठी जगतं. तर तुला बेडूक व्हायचं आहे का मुंगी व्हायचं आहे का आणखी काहीतरी मोठं व्हायचं? तर आईवडिलांचे संस्कार. दुसरं म्हणजे भाऊ-बहिणींचा सपोर्ट. तिसरी गोष्ट म्हणजे मित्र. खूप महत्त्वाचं आयुष्य आहे सर. ज़िंदगी में दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. बहुत इम्पोर्टेंट है. स्पेशली इन प्रोफेशनल कॉलेज आपके जो दोस्त होते हैं, और वैसे भी ज़िंदगी में दोस्त की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. दोस्त. चौथी चीज़ रहती है किस वातावरण में आप पढ़ रहे हैं, वातावरण की ज़रूरत है. पांचवी है चीज़ आपके सीनियर बैच. दे आर योर रियल टीचर, सीनियर बैच. छठी चीज़ होती है हार्ड वर्क. मेहनत है. मेहनत की देयर इज नो शॉर्टकट. सातवीं चीज़ होती है कंसंट्रेशन. तो जब आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दे दो. तो ध्यान करो, कंसंट्रेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम. आने वाला कल, जाने वाला पल. समय का रिस्पेक्ट द टाइम. स्टडी, कंसंट्रेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, टाइम, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा. उसके बाद आता है गाने. प्रोफेशनल कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती है. एक किताब एक तकिया होती है. तो मैं तकिया नीचे रखता था कि बाय डिफ्यूजन कुछ हो जाए. संगीत का मैं बड़ा शौकीन हूँ. गाने रहिए. और पढ़ाई प्रोफेशनल कॉलेज में इकट्ठा मत करिए, ग्रुप्स के साथ करिए. उससे आप बोर नहीं होते. गाने. तो मुझे आपने एक सवाल पूछा है, हम थोड़ा गीत सुनाएंगे भाई. म्युझिक थेरपी सर तुमची हॉबी म्हणून का लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट? हाँ, वीर ज़ारा. देखिए आपने तेरे लिए. Powering on. Connected. कोई डांस करने आएगा? Anybody to dance with me?
शाहरुख खान के साथ मॅडम सर इंटरनॅशनल कामाबद्दल आपण बोलत होतो की तुम्ही ऑलमोस्ट 60 एशियन देशांबरोबर तुमचं काम आहे. तसंच WHO आणि युनिसेफ बरोबरही तुम्ही काम करताय. आयोडीन फॉर्टिफिकेशन बरोबरच आयर्नशी रिलेटेड पण म्हणजे ॲनिमियाशी रिलेटेड तुमची कामं आहेत. तसेच ह्या पोषण योजनेचं पण तुम्ही सदस्य आहे. तर आम्हाला त्याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. माझी फर्स्ट इंटरनेशनल कंसल्टेंसी झाली भूटान की किताब लाए हम दिखाने के लिए आपको. तो आई वेंट देयर इन 1983. अब ये ध्यान से सुनिए. ज्यावेळेला तुम्ही दुसऱ्या देशात कन्सल्टंट किंवा एक्सपर्ट म्हणून जाता तर सगळ्याच्या अगोदर नम्रता, बी पोलाइट. नंबर 2, लिसन, लर्न टू लिसन. इवन एज अ डॉक्टर, सर, ताई, भैया, doctors have stopped listening. I have written an article in the Horizon. आपको दे दूंगा मैडम कॉपी. इट्स इन द यूट्यूब. एक स्टडी किया था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट के पास 2 मिनट लगाते. कितने? 2 मिनट्स. अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर दर्द है. अच्छा सर दर्द है, जाओ सीटी करके आ जाओ. अरे यार पूछो ना क्या तकलीफ़ है, कब से है और क्या परेशानी है, बुखार है क्या, उल्टी है क्या, सीधा सीटी स्कैन. दिस इज़ नॉट डन. मैंने सर पब्लिकली बोला है ये नहीं चलेगा. आई वुड कंसिडर दिस एज मैल प्रैक्टिस, ऑफेंसेबल, क्रिमिनल ऑफेंस. तब सुधरेंगे. तो आई टोल्ड यू फर्स्ट, listen, be polite. Number 3, leave your ego as an Indian in India. Because neighboring countries have a lot of inferiority complex. कहाँ हिंदुस्तान, भूटान, कहाँ नेपाल, कहाँ बांग्लादेश, कहाँ मालदीव्स, कहाँ थाईलैंड, कहाँ म्यांमार, कहाँ बर्मा, कहाँ श्रीलंका. छोटे छोटे देश है. तो अपना इंडिया का ईगो अपने घर में रखो या पॉकेट में रखो. दैट्स नंबर 3. Number 4, work hard. Again, the same principles. Number 5, try to learn the language. I still remember in Bhutanese, when you greet, it's called Kuza Zompala. Kuza Zompala is how are you? I also know in Russian, Chinese, Spanish, in Swahili, Arabic. तो उनकी भाषा सीखने की कोशिश करो, उनको अच्छा लगता है. बड़े सिंपल है. वेलकम, धन्यवाद, हाउ आर यू, खाना खाया क्या. आज की चेहरे के ऊपर मैंने मुस्कान नहीं देखी. तो इस तरह से काम कर लीजिएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर यू गिव. एंड आई यूज्ड टू राइट द रिपोर्ट देयर, रातों रात जाग के उनके साथियों को लेके. अरे दूसरी इम्पॉर्टंट, उनके घर में जाने जरूर खाना खाना. बिरादरी ना आपण म्हणतो ना भावकी, तशी तशी निर्माण होते भावकी. तर मी रिपोर्ट तिथंच हेल्थ मिनिस्टरच्या समोर प्रेझेंट करून, इफ यू वॉन्टेड एनी चेंजेस, if they are scientific, I'll make the corrections. If they are not scientific, I'll say, I'm sorry, sir, I wasn't able to do that. So that's what they liked about me. So Bhutan के बाद, I went to Spain. There I gave a paper. Then I was invited to go to South America in Peru, Lima. ऐसा था, इसे तरह बढ़ते गए. इतना कि लोग कंटिन्यू टू वेट फॉर 6 months कि हमें डॉक्टर पांडव ही चाहिए. पण कामही तसंच होतं. आय यूज्ड टू डू टेक्निकल, रिपोर्ट राइटिंग, एडवोकेसी, ॲडव्हर्टायझिंग, लॅबॉरेटरी सिखाता.
ऑल द स्किल्स एक आदमी कर रहा था. तर ते भाग्य मिळालं. आय वर्क विथ ॲडव्हर्टायझिंग कंपनी ऑल्सो, उल्का ॲडव्हर्टायझिंग. जो लोगो दिखते ना पॅकेट पे, दॅट आय मेड इट. तर तुम्हाला फॉर्मल एज्युकेशन नाही, पण आयुष्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी पण शिकाव्या लागतात नॉन फॉर्मलमध्ये. My most interesting consultancy, you will ask me, was in China. Very interesting. It was 1993. China had just started opening to the rest of the world. President Nixon was the president of the United States. Henry Kissinger was his foreign secretary. So I was the youngest person. I was leading a team. I was the youngest member of the team, but I was the team leader. I spent 3 months in China, January, February, March 1993. याद है मुझे अभी भी. तो we wrote the report. China is a big country. सब जगह जाके हमने रिपोर्ट कंपाइल किया वगैरह वगैरह. Then I said I want to meet the chairman of the Communist Party of China. Minister का तो ठीक है. Whenever I used to go to a country, I used to meet the prime minister, president, king, queen, prince. तभी मैं जाता था. उसके बिना मैं नहीं जाता था. तो उन्होंने बोला, डॉक्टर पांडव, आर यू ऑल राइट? मीटिंग द चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इवन वी कांट मीट हिम. आई सेड दैट्स व्हाई आई वांट टू मीट हिम. तो उन्होंने बोला ये मुश्किल है. देन आई अडॉप्टेड महात्मा गांधी स्टाइल. अगले दिन से मैंने खाना बंद कर दिया, फास्टिंग. तो बोलेंगे देखेंगे कब तक करेगा ये. तो आई वॉज फास्टिंग फॉर 24 आवर्स. पानी पीता था, उसमें ग्लूकोज नहीं मिला यार. अगले दिन बोले चलो डॉक्टर साहब, ही हैज़ अग्रीड टू मीट यू. इन चाइना, दोज ऑफ यू बीन टू चाइना, आई हैव बीन टू चाइना 12 times. There is an inner forbidden city and outer forbidden city. The Communist Party leadership, top leadership sits in inner forbidden city. Very security zone, very, very high security. तो हम चले गए, उन्होंने वो बिठाया. डॉक्टर पांडव, वेलकम टू चाइना. आई हर्ड दैट यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर चाइना. यू आर फ्रॉम इंडिया. हिंदी चीनी बाय बाय. हमने मन में बोला छोड़ो यार, हिंदी चीनी बाय बाय. तो आई हैव 3 questions फॉर यू. आई सेड यस सर. आई वांट टू नो what is the United States of America doing? Because they are interested in America. सारा दुनिया अमेरिका ओरिएंटेड है. अब पिक्चर बदल गई है अभी आज के दिन में. तो I said there is no country in the world which does not have iodine deficiency. Everybody is iodosyl in different forms. They said okay. Number 2, I am not only the Prime Minister of China. सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ये हिस्सा. मी चीनचा प्राईम मिनिस्टर नाही आहे, पण मी फायनान्स मिनिस्टर पण आहे. तर फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मी ह्याच्यामध्ये वाय शुड आय इन्व्हेस्ट मनी इन दिस प्रोग्राम. सो बलवंत वो किताब है यस वाली. यस बलवंत किताब है यस वाली किताब. यस. So this was my thesis topic. देखो कौन सी चीज़ कहाँ में. I spent 2 years in Canada. I got a degree in health economics. I'm India's first health economist. So he wanted cost-benefit ratio. तो मैंने बोला sir, if you give 1 rupee, you'll get back 10 rupees. He said okay. Then he said, my Communist Party of India, our agenda is. This is the book I wrote. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, अभी मेरी सारी किताबें OEP में आती. देखो ना, लुक एट द पैराडॉक्स. सो दिस इज यस, दिस गॉट अ गोल्ड मेडल ऑल्सो. आप देख सकते हैं बाद में. बाय द वे मैडम, मेरे पास सिर्फ 30 गोल्ड मेडल है. ओनली 30. ना मांगो ना सोना चांदी, मेरे पास कुछ आया है ही नहीं. 30 है 30. तो उन्होंने बोला कि आवर पार्टीज एजेंडा इज पॉवर्टी एलिवेशन. हाउ विल इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज्ड हेल्प दैट? आई टोल्ड हिम सर, आपने मुझे बताया था सर IQ पॉइंट्स एंड द इकोनॉमिक लॉस. सो आई टोल्ड हिम दैट. बाहर गए थे, 500 लोग थे बाहर, बिग हॉल. ही सेड
welcome Dr. Pandav and your team members. I want to tell that my governors of the provinces that this morning I had a meeting with Dr. Pandav. I asked him 3 questions. These are the questions, these are answers. As the Prime Minister of India, of China, I am prepared to make any resources to give a grant so that this problem is eliminated. Can you imagine? Premier of China, Communist Party chairman, leader. Within 1 minute, we pledged 100 million rupees, dollars were gathered, 100 million. And I want to tell you, within 5 years, China eliminated IDD. 5 साल में उन्हें कर दिया. मेरे जिंदगी का this is a high point. Number 1, I went beyond political boundaries. Incidentally, I come from Solapur, na? Dr. Kotnis की अमर कहानी. 1936, Japan had invaded China, so Dr. Kotnis went there as a medical aid. He fell in love with the Chinese girl. I also met her later. तो मैंने पार्टी को बोला कि मैं तो सोलापुर का रहने वाला हूँ, डॉक्टर कोटनिस के घर से आता हूँ, तो आई गॉट अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट तब से, हाई प्रायोरिटी. उस समय चाइना में रास्ते में सिर्फ 7-8 गाड़ियाँ दिखाई थी, बाकी सब लोग साइकिल से चलते थे, लाइक एंड्स. So that was the highest point. The second highest point in my life, in fact I would say the first, was meeting President Nelson Mandela. Nelson Mandela, I met him in Dhaka, Bangladesh. जिस व्यक्ति को 27 साल जेल में बैठ गया, लेकिन उसने किसी से दुश्मनी, he said peace, शांती शांती शांती. त्यांच्या चेहऱ्यावरून वाटलं की काय भाव आहे, अगदी शांत भाव आहे, शांत. भगवान से कम नहीं है वो, नेल्सन मंडेला. Then I met many prime ministers, President मिलते रहे, King of Thailand. He gave appointment for 15 minutes, but he spent 2 hours and 15 minutes with us, madam. 2 hours, and King of Thailand, जो वहाँ उनको भगवान मानते, भगवान. तो ऐसी कहानी है करमाड़ा to this place. बताइए. सर, आज आपल्याकडे विद्यार्थी मित्र पुष्कळ आहे आणि सरांनी इथे आपल्या पद्म फेस्टिवलच्या पहिल्या दिवसापासून ते औरंगाबादला किंवा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आहेत आणि त्यांनी वेगवेगळ्या शाळांना पण भेटी दिलेल्या आहेत. तर आज इथेही आपल्याकडे स्टुडंट्स आहेत, तर त्यांना तुम्हाला काय सांगायचं आहे? हाँ जी, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमीन सयानी बोल रहा हूँ. आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिएगा. जो सबसे बढ़िया सवाल हो गए उसको हम बख्शिश देंगे. हाँ जी. Any questions from the audience, please? अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए, क्या काम करते, और यहाँ पे आज क्यों आए, ये भी बताइए. हाँ जी. क्या हुआ? Stunning silence. इसका मतलब 2 होता है. एक तो मैंने जो बोला वो किसी को समझ में नहीं आया. दूसरा है कि आपको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत समझ में आया, इसलिए आप नहीं पूछना चाहते. सर, मी सतीश अन्वेकर, पत्रकार, दैनिक नवराष्ट्र नवभारत. मला तुम्हाला हे विचारायचं सर, तुम्हाला ते आयोडीन मॅन जे म्हणतात त्यामागची जी पार्श्वभूमी, तुमचं खूप मोठं योगदान आहे. आपल्या भारतामध्ये जे गलगंडासारखे जे आजार होते यावरती, त्याच्यावर तुम्ही जे संशोधन केलं आणि विशेषतः टाटा नमक जे खूप प्रसिद्ध झालं, आयोडीनयुक्त मिठामुळे अनेकांचे म्हणजे आरोग्य, आपल्या सर्वांचं आरोग्यपूर्ण जी जीवनशैली आहे त्याच्यामध्ये खूप इम्प्रूव्हमेंट झाली. तर तुम्हाला जे म्हणजे आयोडीन मॅन जे म्हणतात त्याबद्दलच तुम्ही सांगावं अशी माझी विनंती आहे. आयोडीन मॅन ही पदवी खरं म्हटलं तर मला कर्नाटकामध्ये एका वर्तमानपत्राने दिली, आयोडीन मॅन. पण मलाही माहीत नव्हतं. आता इन इंडिया, हु इज द आयरन मॅन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया, जोर से बोलो यार. आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन. अरे यार तुम मुझे रुला रहे हो. सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? हु इज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया?
अभी आए थे हमारे कॉन्फ्रेंस में, मिलिट मैन ऑफ इंडिया, एंड हु इज आइडिन मैन ऑफ इंडिया। ये सवाल पूछा था एक एग्जाम महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न विचारला होता, हु इज द आयडिन मॅन ऑफ इंडिया, त्यांच्या कुठल्या तरी एंट्रन्स एक्झामिनेशनमध्ये विचारतो। सर मेरा नाम सैयद अफजल हुसैन है, मैं ध्यानचंद फाउंडेशन का मेंबर भी हूँ। तो पहले आपके लिए एक शेर बोलता हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं, आपको देख के तो ऐसे ही लगता है। तो सर आपने जो बताया कि आजकल डॉक्टर कम बात कर रहे हैं, और होता भी है कि डॉक्टर आज तो मतलब कुछ तो बात भी नहीं करते हैं, खाली पूछते हैं और प्रिस्क्रिप्शन चालू हो जाता है, ये ले लीजिए, इसके बाद नहीं होता आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो सर ये जो सिस्टम आया है ये मेडिकल फील्ड में, ये पेमेंट सीट के वजह से तो नहीं कि पेमेंट सीट देकर उसको एमडी बनना है, वो 2 करोड़ देकर एमडी कर रहा है, एमबी कर रहा है या स्पेशलाइजेशन कर रहा है, उसको पैसे कमाना भी है। तो ये वाला एक सिस्टम तो नहीं आ गया है आपके फील्ड में? ये बाजार है, बाजार। वही मेरा सवाल है कि मेरे घर में भी 2 डॉक्टर थे, तो मगर वो थोड़ा सा भी हो, मेरे काका जात भाई जो थे वो हेल्थ डायरेक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, मगर मैं जब उनको देखता था तो 15-20 मिनट लेते थे नफ्स पकड़ के, और वो डायग्नोसिस वहीं हो जाता था पेशेंट का। अब वैसा नहीं हो रहा है सर। इसके लिए क्या करें, मैं क्या बताऊँ, ये तो दिस हैज़ बिकम कमर्शियल, ये तो इसका व्यापार हो गया है। पुराना ज़माना गया, मुझे याद है, मुझे बचपन में, शायद भैया आपको भी याद होगा, ताई तुम्हारे पास आठवत असेल, कि आपल्याला फॅमिली डॉक्टर होते, वो घर पे आके देखते थे। मेरे डॉक्टर माहौल में ऐसे थे कि मेरे साथ देखने आते थे और मेरे साथ बुद्धिबल खेलते थे। ही वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली। सो दैट स्ट्रक्चर वी आर डिस्ट्रॉयड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So I would very strongly recommend that the family doctor, family physician should come back. और उसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मैडम, भैया, कि हमारे यहाँ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक कई डॉक्टर बड़े, उनकी संख्या देखें तो 10 लाख होती है। उनको 1 साल की ट्रेनिंग दे दो, वो क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कलीग, मुझे उनको पसंद नहीं होगा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव जो नर्सिंग है, सम ऑफ द नर्सेज डू बेटर जॉब द डॉक्टर्स, उनको प्रमोशन दे दो। जब तक इफ़ यू लर्न टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तब तक समस्या का सवाल नहीं होगा। यू हैव टू लर्न टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सर फॅमिली डॉक्टर म्हणजे आता रिसेंटली जे आहे त्यांनी एकूण ब्रांचेस जे काढले आहेत, MBBS नंतर एक कोर्स पण आहे फॅमिली डॉक्टर, कदाचित ह्या सगळ्या सिच्युएशनसाठीच असेल। आणि दुसरं एक आता सर जसं म्हणाले की होमिओपॅथी, ॲलोपॅथी यांच्यासाठी एक ब्रिज कोर्स म्हणून पण आलेला आहे की ते नंतर ऑफिशियली प्रॅक्टिस करू शकतील असं। सर मला अजून थोडं आयोडीनबद्दल डिटेल विचारायचं होतं की मुलांच्या दृष्टीने आपल्याला आयोडीनची शरीराला रिक्वायरमेंट किती असते, आणि आयोडीनचं प्रमाण कमी झालं तर काय काय परिणाम आपल्या शरीरावर होऊ शकतात, मनावर आणि शरीरावर? गुड क्वेश्चन। तुम्हाला धक्का वाचेल मी काय सांगतो ते। आयोडीनची रिक्वायरमेंट इज ओनली 150 मायक्रोग्रॅम्स। नाउ विल अंडरस्टँड हाऊ मच इज मायक्रोग्रॅम। 150 मायक्रोग्रॅम। आपला डोक्याचा केस आहे ना, एक केस, त्याच्यावरती जी क्वांटिटी बसेल तेवढी आपल्याला लागते आयोडीन, पण ती रोज लागते। यू हॅव टू टेक इट एव्हरी डे। दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट। You have to consume iodized salt, adequately iodized salt every day. तुमची ग्लैंड कैन स्टोर इट फॉर 6 months। उसके बाद आपको स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे ज़िंदगी में जो मैंने इतने बड़े गॉइटर देखे, इतने बड़े, आपला भोपळा आहे ना, भोपळा आहे ना, भोपळ्याची भाजी करतो ना आपण, एवढे मोठे पाहिलेले। आणि पाकिस्तानमध्ये चित्राल आणि गिलगिटमध्ये मॅडम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज टू ऑकर बिकॉज ऑफ गॉइटर इन द चाइल्ड। इतनी सीवियर डेफिशिएंसी थी। तो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन डेफिशिएंसी के। द मेन प्रॉब्लम ऑफ आयोडीन इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ ऑफ ब्रेन, सगळ्यात महत्त्वाचं ब्रेन डेव्हलपमेंट, फिजिकल डेव्हलपमेंट,
stillbirth, miscarriages, abortions. These are called spectrum of iodine. मेरी जो पिंक किताब है उसमें लिखा है सब कुछ. सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल डेवलपमेंट. The brain starts working since the child is in the 3rd month of pregnancy. तब से ब्रेन की ग्रोथ शुरू होती है. एंड बाय द एज ऑफ 2 years 90% ऑफ योर ब्रेन इज कंप्लीट. तो इस पीरियड बड़ा इम्पॉर्टेंट पीरियड रहता है आयोडीन के लिए. उससे आपके सेल्स बढ़ जाते हैं. आर्बोरायझेशन जसं आपण म्हणतो, जंक्शन म्हणून ते वाढतं. त्याच्याप्रमाणे तुमचे IQ वाढते. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पिरियड आहे. म्हणून तुम्हाला माहीत नाही की वेन यू बिकम प्रेग्नेंट, म्हणून रोज आपल्या आहारामध्ये आयोडाइज सॉल्ट ठीक मात्रा में खाना चाहिए. इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर. सर, ये नॉन फार्माको थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए आई बिलीव स्ट्रांगली. मैं खुद आई हैव गॉट हाइपरटेंशन, मुझे खुद को ब्लड प्रेशर है. वही आप बहुत जोर देते हैं उस पर, तो उस ऑडियंस को उसके बारे में ज़रा बताइए. ब्लड प्रेशर हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन डिसीज. वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन. सबसे ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज द वर्ल्ड इज सफरिंग इज फ्रॉम स्ट्रेस. उसका जवाब भी बड़ा सिंपल है. सर ने पूछा कि बिना दवाई कैसे ठीक कर सकते हैं. सबसे पहले what I call as root cause analysis. Go to the bottom. इसमें मेडिटेशन सीखो. इट्स एक्टिव प्रोसेस. जैसे इसकी तपस्या है मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नंबर 2, डिसिप्लिन. मेंटेन अ डिसिप्लिन लाइफ. कभी भी खाना, कभी भी सोना, ऐसा मत करिए. डिसिप्लिन लाइफ. नंबर 3, मंत्र जाप. आप किसी भी धर्म के हो, आप मंत्र जाप करते हो. आई एम ए लॉर्ड शिवाज डिवोटी, सो मैं करता हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या ओम. आई कैन डू. लेट्स डू इट टुगेदर. लेट्स ट्राई. Take a deep breath and say Om. Say that with me. I used to do it 56 seconds, madam. I want to reach 2 minutes. Om is the pulse of the universe. Pulse है, दुनिया का पल्स है. आप लोग कर लीजिएगा. You did not do with me. हम लोग सब मिलके बोलेंगे ओम. सब लोग बोलेंगे मिलके ओम. प्लीज सगळ्यांनी मिळून म्हणायचं आहे. प्लीज पार्टिसिपेट. रेडी? ओ बोलो ना. यू गेट अ यूनिवर्सल साउंड. बहुत बढ़िया आवाज़ आती है ओम की, बहुत आती है. जरा हम हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेट लड्डू होते तो हम ज़रूर देते. पता नहीं क्या पोजीशन है मिलेट लड्डू की. तो ओम मंत्र जाप. मैंने क्या बोला पहले? मेडिटेशन, डिसिप्लिन लाइफ, मंत्र जाप. 3 हो गया. 4th, स्लीप. कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए रात को. द स्लीप बिटवीन 12 o'clock या 1 o'clock to 4 o'clock इज कॉल्ड द रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट. उस समय आप सपने दिखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज 5 और 6. आफ्टरनून में टेक 15 मिनट्स नैप, पावर नैप. 15 मिनट, आधा घंटा. ठीक है. उसके बाद योगासन कर लीजिएगा आप. उसके बाद मंत्र जाप बोल दिया. उसके बाद प्राणायाम. उसके बाद हंसते रहिए. डॉक्टर 1995 में डॉक्टर कोठारिया, किसने डॉक्टर के नाम है उनका, ही स्टार्टेड द लाफ्टर क्लब. कटारिया. वेरी गुड. तालियां बजाओ उसके लिए. कटारिया. हंसते रहिए. अब हम लोग साथ में मिलकर हंसेंगे अभी, बिना जोक. हंसते रहिए. रिलीज. मेरी माँ बहुत जोर से हंसती थी.
Keep laughter is the best medicine. That's a good one. बहुत अच्छा है. You can make noise तो प्राणी के भी आवाज कर सकते हैं. बू 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 क्वाक. The most important, laughter is the best medicine. Most important, madam, you don't have to pay for it. You don't have to pay. तो लाफ्टर बोला. दूसरी बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपने बचपन के जो दोस्त हैं उनके साथ संबंध रखो, उनको हफ्ते में एक बात करो, बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, दैट गिव्स एंडोर्फिन्स ना. मैंने बोला हैप्पी हार्मोन्स, उनसे बात किया करो. और मेरा प्यारा संगीत सुना करो सर. संगीत ठीक है भाई. नॉर्मल लिस्ट दिस कैन इंक्रीज. मैंने खाली एक ट्रेलर दिखा दिया. ओके. सर अभी आपने जो कहा की ओंकार आणि प्राणायाम, तर मधल्या कोविडच्या काळात आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी फॉलो करत होतो. आणि अजून एक नवीन म्हणजे टेलिमेडिसिन कोविड काळामध्ये, That's right. Yeah, तर right. त्याबद्दल तुमचा. I think ऐसा है टेक्नोलॉजी का, एवरी टेक्नोलॉजी इज अ गुड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड यूज इट इन अ बैलेंस्ड वे. स्थिरता रखिए. अब टेलीमेडिसिन इज एन एक्सलेंट इंटरवेंशन. जहाँ जा नहीं सकते तो क्या करें, और कौन सा. लेट बेस्ट बी नॉट द एनिमी ऑफ गुड. लेट बेस्ट बी नॉट द एनिमी ऑफ गुड. चलते रहिए. थँक्यू सर. हाँ भैया. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू भाई लोग, भैया आपको कुछ सवाल, आपको कुछ पूछना है? बस एक लास्ट क्वेश्चन सर. हाँ, लास्ट मत बोलिए. अच्छा. और कंटिन्यू कर सकते हैं. वैसे तो आपसे कितनी भी देर भी बात करें वो कम है. पता ही नहीं चला कितना टाइम गया. बट वी हैव फर्दर प्रोग्राम्स. We'll have the questions from the audience. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन शॉर्ट में रखें. ऑडियंस तालियां. सवाल पूछो. पूछिए ऑडियंस. आपके बिना हमारी जिंदगी नहीं. हम स्टेज वाले का क्या है, विदाउट ऑडियंस स्टेज इज नील. हेलो सर, मेरा नाम राधिका जायसवाल और मैं करंटली 11th स्टैंडर्ड में हूँ और नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. अरे वाह रे वाह राधिका, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट. मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके इंस्पिरेशन कौन थे? इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद स्वामी जी. स्वामी जी थे, भारतवासियों बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और जो भी काम करते हैं पूरे मन से किया करो. उनका कोटेशन है. स्वामी विवेकानंद मेरे हीरो है. स्वामी जी ने कहा था 1897 में, 50 साल में मेरा भारत देश आज़ाद होगा. 97 + 50 कितने बेटा? 47. 1947 we became आज़ाद. Then he said in 21st century मेरा भारत क्या होगा? विश्वगुरु होगा. विश्वगुरु. अब क्या है? हम विश्वगुरु है. Today in iodine deficiency disorders, madam, 84, only 5% of the population was consuming iodine salt. Today 93% of the population is consuming iodine salt and we are number 1 in the world. हम विश्वगुरु है. और इसका बड़ा क्रेडिट सर को जाता है. विश्वगुरु है, विश्वगुरु. वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, एक्सलेंट. नमस्ते सर, माझं नाव हर्षदा राजू दिवेकर आहे. काय म्हटलं तू बेटा? नाव काय तुझं? माझं नाव हर्षदा राजू दिवेकर आहे. अगं हळू बोल ग. माझा प्रश्न असा आहे सर, तुम्ही जी संकल्पना मांडली आहे सही पोषण देश रोशन, या संकल्पनेच्या मागे तुमचा काय उद्देश होता? अरे खाने बिना कैसे आगे बढ़ेगा देश? खाना तो चाहिए. न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 90% of your diseases are caused because of poor nutrition. 90%. Balanced diet खाइए. Balanced diet is very important. very important. दूसरी बात है, we are going backwards. 2023 is the international year of millets. पूर्वी आपण भाकरी, ज्वारी, नाचणी खात नव्हतो. शेवग्याच्या शेंगा खात नव्हतो. आता शेवग्याच्या शेंगाची पाला दिल्लीमध्ये 1200 रुपयाला 1 किलो मिळतो. आता मी तोच व्यापार करणार आहे आता. शेवग्याच्या शेंगाची पानं घेऊन. गुड क्वेश्चन. बैलेंस डाइट वेरी इंपॉर्टेंट. और वो भी टाइमली है. टाइमली होना ज़रूरी है.
और दिन में पानी 4 लीटर पिया करो, 4 लीटर्स ऑफ वाटर। खाना खाने के पहले आधा घंटा पानी मत पीना, आधा घंटे के बाद पानी मत पीना। जो खाना खाते हैं उसको 32 बार चबाइए, 32 टाइम्स। बहुत जल्दी में खा दे, ऐसा नहीं करना। चू इट 32 टाइम्स, क्योंकि भगवान ने आपको 32 दात दिए हैं। तर हे नियम आपल्या पूर्वीपासून आले, मी तुम्हाला नवीन काही सांगत नाही आहे, पण आपण कालांतराने विसरलो। बोला। सर, न्यूट्रिशनमध्ये अंडर न्यूट्रिशन आणि ओबेसिटी आता सध्या दैट्स अ दोन्ही मेजर चैलेंज मैडम, मेजर चैलेंज। अभी क्या बताओ, ओबेसिटी 14% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबेसिटी। इसमें क्या किया कि ये जो फास्ट फूड है ना, क्या बोलते हैं इसको, पिज़्ज़ा, बर्गर, एरेटेड ड्रिंक्स, इट्स अ पॉइजन, विष है थे, उसको बंद करना चाहिए। पर लेकिन इन लोगों की मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आई हैड गॉन टू नेपाल, 14,000 फुट, 14,000 फीट। वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, याक नावाचा एक प्राणी असतो, त्याची चीज़ बनवते, चीज़। तो वहाँ फैक्ट्री के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा था, 14,000 फीट ड्रिंक। इतनी मार्केटिंग है उनकी। बच्चे लोग, और कोई सवाल? हॅलो सर। हाँ जी। मी विजेंद्र काबरा समाजकार्य महाविद्यालयाचा स्टुडंट आहे। माझं नाव सुरेश दिलीपराव बारड आहे। तर आपल्या क्षेत्राचा थोडा वेगळा प्रश्न आहे माझा। विचार। तर आपला देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखले जाते आणि 40 ते 50% आपली इकॉनॉमी कृषीवर डिपेंड आहे। तर सर, मला असा प्रश्न आहे की साऱ्या म्हणजे जगाचे वडील म्हणजे ते माझे वडील आहेत, एक शेतकरी आहे। तर आज वडील काय म्हणतात की तू शेती न करता एखाद्या मोठ्या शहरात जा आणि पंपावर तरी काम कर 15-20 हजार रुपये महिन्यानं, आणि तिथं काहीतरी करिअर घडव। जसं की इस्राईलसारखा देश आहे, कमी पाण्यात पण त्याच्यावाल्या देशातनी ते चांगल्या पद्धतीनं उत्पन्न घेऊ शकते। आज जगाच्या नक्षावर आपण जर पाहिलं तर इस्राईल हा एका बोटा इतका आहे, पण इस्राईल म्हणाले सुद्धा आज जगातनी 1 घंटा लागते। साध्या मोठ्या मोठ्या देशापैकी अमेरिकासुद्धा त्याची चांगल्या पद्धतीने इज्जत करते। तर आज एवढा मोठा आपला राजासारखा बाप आहे, ते म्हणजे शेतकरी, ते का असा म्हणून लागला की भले सायन्स पुढे गेलं, त्यानंतर टेक्नॉलॉजी भरपूर आली, पण सगळ्या गोष्टी तर बेसिकपासूनच आहेत, जे म्हणजे कृषी। आज प्रत्येक व्यक्ती इथं आला, 10-11 जण आले, पण असा प्रश्न कोणालाच पडला नाही की ज्या गोष्टीतून आपली उत्पत्ती आहे ते म्हणजे शेती। तर आज ते शेतकरी त्याच्या मुलाला म्हणते इंटरेस्ट असून पण की तू शेती नको करू, काहीतरी मोठ्या शहरात जा। तर माझा प्रश्न असा आहे सर की आज जे शेतकरी आहे ते त्याच्या मुलाला काय म्हणते की तू जा सिटीत जा आणि कुठेतरी चांगलं शिक्षण घे आणि कुठेतरी तू आलं करिअर घडव। त्याच्यावर तुमचं मत काय सर? ह्याच्यावरती मी बराच विचार केला आहे। महात्मा गांधी काय म्हटलं ते ग्राम स्वराज, आपण ते पाळलं नाही। आपल्याकडं अर्बनायझेशन खूप रॅपिडली झालं आहे। तर आज इथं संध्याकाळी डॉक्टर कमल तावरे येणार आहेत, त्यांनी 5 गोष्टी सांगितल्या होत्या। पाठशाला, व्यायामशाला, संस्कारशाला, गोशाला, आणखी एक शाळा सांगितली होती। वी हॅव टू गो बॅक टू द विलेजेस। बलवंतराय मेहतानी 1954 साली एक रिपोर्ट लिहिला होता, बलवंतराय मेहता फॉर ब्लॉक डेव्हलपमेंट। तो आपण विसरून गेलो, ब्लॉक डेव्हलपमेंट 1954। वी हॅव टू गो बॅक, रिअल इंडिया लाईज इन द विलेजेस। ह्याच्यामध्ये मी सांगू शकतो, मोहन दारिया त्यांचं वनराई आहे, त्यांनी रिव्हर्स मायग्रेशन सुरू केले। लोक मुंबई सोडून गावी यायला लागले, पाणी अडवून, गाई म्हशी ठेवून, कोंबड्या ठेवून। त्यांचा क्वालिटी ऑफ लाईफ इज व्हेरी हाय। आता शहरामध्ये, मी दिल्लीमध्ये 52 वर्ष झाली, किती 52 वर्ष, एवढं जबरदस्त पोल्युशन आहे, एवढं पोल्युशन आहे की तुम्हाला ऑक्सिजन नाही हो मिळत, तुम्हाला विष मिळतं, विष, ऑक्सिजन नहीं मिलत। गेल्या 4 दिवसमध्ये मी तुम्हारा सगळ्या लोकांना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन, विष नहीं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। आणि ह्याचं उत्तर आपल्याकडे आहे। इट्स अप टू अस। ग्राम स्वराज, लर्न इन दैट। मेनी ऑफ द क्वेश्चन, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा चिंतन करिए, उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न उत्तर। नमस्कार, मी उत्तम बारसे, मी ग्रामसेवक म्हणून नोकरी करतो, परंतु आयोडीन म्हणजे नमक, आम्ही बोर्ड बघतो, टाटा नमक, कोणत्याही कंपनीचे नमक,
पण हे जे आयोडीनयुक्त नमक आहे हे माणसाने किती खाल्लं पाहिजे, कोणत्या वयातल्या माणसाने किती खावं, किंवा आयोडीनयुक्त नमक तुमचं मिशन पोषण जे आहे त्यानुसार प्रत्येक गावापर्यंत हे गेलं पाहिजे, कारण आरोग्यासाठी तर खूप महत्त्वाचं आहे ना. प्रत्येक अन्नपदार्थासाठी नमक लागतंच आयोडीन, तर त्याचं प्रमाण आणि त्याची जनजागृती व्हायला पाहिजे. आम्हाला फक्त एवढंच माहिती आयोडीनयुक्त नमक खा, बाकी काहीच माहीत नाही. गुड क्वेश्चन, चांगला प्रश्न आहे. आता मी सांगितलं ना 93% भारतातले लोक आयोडाईज सॉल्ट खातात. खायचं फक्त 2 टेबलस्पून 10 ग्रॅम्स पर पर्सन पर डे, 10 ग्रॅम्स. नाव क्वेश्चन इज वाय सॉल्ट चोजन. हा एक पदार्थ आहे की आपण रोज खातो, थंडी असू द्या, गरमी असू द्या, मुलगा असू द्या, मुलगी असू द्या, शहर ग्रामीण. इसलिए नमक इज ओनली अ व्हीकल. आयोडीन इज एडेड बाय केमिकल स्प्रे एंड देन मिक्स्ड. तो नमक सिर्फ 2 चम्मच. बताइए अजून. हॅलो सर. हाँ जी. माय नेम इज साहिल लकेश्री. साहिल, मी मेडिकल स्टुडंटच आहे. कुठल्या कॉलेजचा? SGMC. SGMC लॉंग फॉर्म काय SGMCचा? गोरक्ष आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज. अच्छा, आयुर्वेद आहे का? हां. बरं, उत्तम, व्हेरी गुड. हां, तर सर मी पण आता स्ट्रेसची बरोबर आत्ताच नवीन मेडिकल कॉलेजमध्ये आलो आहे. तर स्ट्रेस वगैरे तुमची पण लाईफ एकदम अशी पहिल्यापासून खडतर होती. तर तुम्हाला एक गोष्ट कायम मोटिवेटेड की पुढे जाण्यासाठी कुठली अशी गोष्ट आहे की तुम्ही कायम अशी कधी हार नाही मानली गोष्टीपासून? हार नाही माना, आम्ही नाही हार माना. आयुष्यात नेहमी स्पीड ब्रेकर्स येतात. तर त्याच्यामध्ये मग स्वामीजी काय म्हटले ते, बिलीव इन योरसेल्फ, श्रद्धा और सबूरी. यहाँ से शिरडी कितना दूर है? 200 किलोमीटर, 300, 125. तो साईं बाबा ने क्या कहा? श्रद्धा और सबूरी. कई बार आपको समय पे टाइम मिलता है, लेकिन सबूरी रखो. आणि मेरा भगवान के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है. जो मैंने बलवंत में लाया, मेरे गुरुजी का मैंने फ़ोटो लाया, रोज़ सुबह और शाम को मैं प्रार्थना करता हूँ. माझा दिवस गणेश वंदनेने सुरू होतो आणि शेवटी गणेश वंदनाने मी झोपतो. श्रद्धा मोठी है, श्रद्धा. मैं हर भगवान को मांगता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई. मैंने भैया को बोला कि मुझे ताजीब लेके दिए, चर्च, सब कुछ पहनता हूँ मैं. आखिर एकम सत्यम बहुधा विपरीता. एक ही मंजिल तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है. इनका खून, मेरा खून, आपका खून अलग थोड़ी है. तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है और एक ही भगवान है. और कोई सवाल? Good evening, sir. Myself Vaishali Mutha from Woodridge High School. I am secondary teacher. My question is this. There are so many honorable dignitaries are there from India, but when it comes to the syllabus updating, we never know about you people who are very much honorable, and you are the main source of our country. So why can't these things introduce in the updating syllabus so that the young generations learn from you and get the inspiration? So what inspiration do we get from here, or how do you help the young learners to know about you? बेटा सच पूछा तो मेरे मन में सवाल नहीं आया था. I didn't think of this. So we should write to the appropriate. Morning there was a discussion on national education policy. So we should bring it into that question. दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस एक चीज़ है, अपनी जगह सही है, but nobody stops you from sharing. सिलेबस का तो ऑफिशियल प्रयत्न हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अनऑफिशियल तो कौन रोकता है आपको? हाँ बेटा, समझ में आया? सर, औरंगाबादमध्ये ह्या ज्ञानयज्ञ फाउंडेशननी आता हे 2रं वर्ष आहे आणि इन्स्पिरेशन आपल्या स्टुडंट्ससाठी आणि सगळ्यांसाठी म्हणूनच हा प्रोग्राम इथे सुरू झाला आहे. आणि हा जर मोठ्या प्रमाणात अटेंड केला तर काहीतरी मोटिवेशन स्टुडंट्सना मिळू शकेल. ज्योत से ज्योत जलाओ. ज्योत से ज्योत. और कोई सवाल? चलो बलवंत भैया. This was the only main reason why the Gyan Yajna Foundation was formed, and the dignitaries, we invited them in Aurangabad, and we have approached the schools and colleges and educational institutes कि अपने बच्चों को ये इंटरेक्शन होना चाहिए ऐसे दिग्गजों का. So I request the audience to give a big clap to the organizers. बलवंत लपे आप खाली प्रोग्राम ख़त्म होने के पहले मैं एक गाना सुनाता हूँ. एक गाना मुझे बहुत याद आएगी आप लोगों की.
क्या आएगी याद? अभी के सेशन सर, जस्ट 1 मिनट सर, पांडव सर, हाँ बोला। 1 मिनट। अभी हमने जो सेशन अटेंड किया है पांडव सर का, कि यहाँ बातों बातों में उन्होंने द पावर ऑफ म्यूजिक का हमें बताया है कि म्यूजिक थेरेपी कैसा हमको यूज कर सकते हैं। वेयर मेडिसिन फेल्स म्यूजिक हील्स। ये मेरा ओरिजिनल कोट है मैडम, कॉपी नहीं किया। चलो। पांडव सरांच्या म्हणजेच आयोडीन मॅन ऑफ इंडिया यांच्या सत्राचं समारोप डॉक्टर वर्षा आपटे या करतील. तो आप सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया चाहता हूँ। आपका कीमती समय आपने मेरे साथ बिताया। शायद आप लोगों को कुछ तो सीखना मिला। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा दिन ब दिन आपकी बढ़ती हो जाए। थँक्यू सो मच. आज आपल्याला डॉक्टर चंद्रकांत पांडव सर इथे अतिथी म्हणून लाभले आणि त्यांनी आपल्याला सायन्स याबद्दल तर आयोडीनबद्दल तर सर्वप्रथम सांगितलंच, पण त्याबरोबर त्यांनी जी प्रॅक्टिकली म्युझिक थेरपी स्वतःमध्ये जो आमूलाग्र बदल झालेला आहे त्यांच्यात, की पार्किन्सन्ससारख्या आजारातनं जेव्हा राष्ट्रपती पदक मिळताना त्यांना व्हीलचेअरवर जावं लागलं, पण आपल्याला आत्ता प्रत्यक्ष ते इथे डान्स करून दाखवत आहेत. दुसरी गोष्ट, त्यांनी जे जगभरात, भारतात आणि जगभरात ज्या ज्या त्यांच्या ठळक आठवणी आपल्याला सांगितल्या आणि आपल्या सगळ्यांना त्या मोटिवेशनसाठी नक्कीच कामाला येतील, की सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळा गावातनं शिक्षणाला सुरुवात करून त्यांनी ज्या प्रकारचं नाव, जसं सरांनी सांगितलं विश्वगुरू आत्ता ह्या क्षेत्रातले झालेले आहेत, आयोडीन मॅन ऑफ इंडिया, तर हे त्यांनी करून दाखवलं आहे. तर त्यांना खूप खूप प्रणाम माझ्याकडनं आणि थँक्यू सो मच तुम्ही सगळ्यांनी इथे अटेंड केल्याबद्दल. या सत्राचा खरा समारोप हा
पांडव सरांचा छोटेखानी सत्कार करून आणि या आमच्या पद्म फेस्टिवलचं मानचिन्ह देऊन डॉक्टर जयदी पद्म फेस्टिवलचं जे मोमेंटो आहे तो सरांना प्रदान करण्यात येत आहे. हा मोमेंटो अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आपल्या फेस्टिवलचं नाव आहे पद्म फेस्टिवल आणि कॉपर मध्ये आपण त्या कमळाची प्रतिकृती साकारलेली आहे.